Hello everyone. Today I'm going to start next unit, that is fourth unit of physical pharmacy, and subject code is 302. Topic is complexation. Uh, Complexation and protein binding. Then what are the complexes? Complexes or coordination compounds are defined as the molecule in which most bonding structures can be described by classical valence theories between atoms, but one or more of these bonds are somewhat anomalous. Then the complexation is the association between two or more molecules to form a non-bonded entity with a well defined stoichiometry is called complexation. In another terms, the complexation is known as is used to characterize covalent or non-covalent interaction between two or more compounds that are capable of independent existence. The intermolecular forces involved in complex formation are the covalent bonds, or another one is van der Waals forces, dipole-dipole interaction, and hydrogen bonds. So complexes are formed because of donor receptor mechanism. Donor is a neutral molecule or ion of non-metallic substance that can be donate the ion pair of electrons, and acceptors is the metallic ion, or sometimes it might be a neutral atom. So this is the definition of a brief description about the complexation. Then there are different steps involved in complexations are first step is the filled ligand orbital overlap, the empty metal ion orbitals. Second step is the ligands are also known as Lewis base. Okay? So that Lewis base donates the electron pairs. And then next step is the metal ion accept that donate electron pair and form one of the covalent bond of the complex ion. Such a bond in which one atom in the bond contributes both electrons is called coordinate covalent bonds. So these are the following steps that involves in the complexation. Then as they are classified according to possible arrangements. Here it is classification of complexes. So it is that complexation, yeah, complexes are divided into three major categories. Number one is metal ion complexes. Second one is organic molecular complexes. And third one is inclusion or occlusion complexes. So let's discuss one by one. So first one is metal ion complexes. In today's class, we discuss about only metal ion complexes. So in metal ion complexes, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की जो हम बात कर रहे थे, तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. वो फोर्सेस कौन कौन सी है? दैट आर van der Waals फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल टाइप ऑफ फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो दीज आर द फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन. देन अब आते हैं हम लोग मेटल कॉम्प्लेक्सेस. These what are the metal complexes? Metal complexes are consist of central metal atom. For example, if हम कोबाल्ट लेते हैं तो उसके बीच में एक हमारा मेन एटम रहेगा जिसको हम सेंट्रल आयन बोलेंगे, और उसके आसपास हमारे दूसरे कंपाउंड्स रहेंगे. तो that metal complex consists of a central metal atom or ion that is bonded to one or more ligands.
or that ligands are ions or molecule that contain one or more pair of electron, okay, that are shared with the metal. वो जो हमारा एक central metal है उसके साथ वो share कर होगा. तो metal complexes can be neutral, positively charged or negatively charged. Okay. Then electrically charged metal complexes are sometimes called complex ions. Then what is coordination compound contains? Then coordination compounds contains one or more metal complexes. So the total number of ligands attached in the central metal or ion is called coordinate number of the particular ion. मैं आगे आपको बताऊंगी what is coordinate number. अभी example देके हम लोग discuss करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब इसके हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है कॉपर और अमोनियम कॉम्प्लेक्स है उसको हम अमोनिया लिगेंड्स जो बोलेंगे, दैट अमोनिया लिगेंड्स इट अटैच टू द कॉपर आयन. जो हमारा कॉपर मेटल आयन है उसके साथ वो हमारा सेंट्रल है, तो अटैच विद दैट कॉपर आयन. हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारा सपोज वो CuNH3 होल स्क्वायर 4 है, तो दैट 4 इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर. देन नेक्स्ट आता है हम लोग व्हाट आर लिगेंड्स. फॉर एग्जांपल इन दिस स्ट्रक्चर दैट कॉपर इज एज अ सेंट्रल आयन, और यहाँ पे जो अमोनिया है दैट अमोनिया उसके साथ हमारा जो लिगेंड है, और ये जो इसके ये जो 6 है दैट 6 इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की. देन व्हाट आर द लिगेंड्स? दैट लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज बेस्ड ऑन कि वो उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं या कितने वो डोनेट कर रहे हैं. तो ये दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो दैट लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, मल्टीडेंटेट और हेक्साडेंटेट. तो फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट. एग्जांपल आर अमोनिया which has a single pair of electron, which is the basic group of bonding with metal ion, is called unidentate ligands. So for example ammonia, that is NH3, H2O, chloride, bromide, NO2, etc. These are the unidentate or monodentate ligands. Then second example is bidentate. Bidentate का best example है हमारे पास ethylene diamine. Then ethylene diamine has two basic group, is called bidentate. For example oxalate ion, oxalate anions and ethylene diamine. तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं bidentate के. Then थर्ड कैटेगरी आती है लिगेंड्स की, मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट. तो मोस्टली लिगेंड्स जो डिफरेंट जिनकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं दैट आर नोन एज मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट. देन फोर्थ वन इज हेक्साडेंटेट्स. हेक्साडेंटेट्स का एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. तो दैट हैज टोटल 6 पॉइंट्स फॉर बॉन्डिंग, जिसमें 4 ऑक्सीजन हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर ग्रुप्स हैं. और ये सब अटैच्ड है हमारे एक मेटल आयन के साथ में, दैट आर अटैच विद वन मेटल आयन. तो ये हो गया हमारा डिफरेंट लिगेंड्स. अब हम बात करते हैं व्हाट आर चिलेट्स. तो इफ सेम मेटल आयन बाइंड विद 2 और मोर साइड्स, तो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नोन एज चिलेट्स. तो ये हमारे हम बात कर रहे थे अभी व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस. तो उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने बात की थी मेटल कॉम्प्लेक्सेस की. तो दिस मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर सैटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग द मेटल आयन कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड अपॉन द फैमिलियरिटी विद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट कैटेगरी है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. तो इन दिस दैट इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस, for example that ammonia molecule is hexamine cobalt 3 chloride as a compound. तो ये हमारा कोबाल्ट है और ये हमारा अमोनिया कंपाउंड है और इसके साथ ही हमारे क्लोराइड आयन है.
और that this is known as ligands. तो ये हमारा जो है ligand ion है, तो इसमें that 6 is known as coordination number. So the ammonia here known as ligands and are said to be coordinated to the cobalt ion, क्योंकि cobalt ion के साथ ये सारे coordinated हैं, and the coordination number of cobalt ion or the number of ammonium group coordinate metal ion is 6. तो ये है हमारा coordination number is 6. And for the other group the coordination number is 2, for this the coordination number is 6, and for this the coordination number is 6. तो ये है हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर. और यहाँ पे हमारा जो मेन सेंट्रल जो मेटल आयन है, यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है, यहाँ पे हमारा सिल्वर है, यहाँ पे हमारा आयरन है, यहाँ पे हमारा क्रोमियम है. तो दीज आर द इनऑर्गेनिक ग्रुप्स दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. तो ये हमारी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. अब इसमें ये बात करते हैं हम कि ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो हमारा मेन जिसके साथ पूरे सेंट्रल एटम जो अटैच्ड है, दैट सेंट्रल एटम इज नोन एज सेंट्रल एटम. और इसमें हमारा ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, इस ग्रुप को हम बोलते हैं लिगेंड और यूनिडेंटेट. जो लिगेंड है वो हमारा लिगेंड आपको मैंने बताया था कि सिंगल है, तो ये हमारा मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड है. इसके बाद ये जो आउटर शेल है हमारी, इस आउटर शेल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर. और ये जो हमारा पूरा ग्रुप है CO विथ वन लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, दैट इज नोन एज लिगेंड, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर. और इस कंबाइंडली इन दोनों को हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये है हमारा. Then each ligand donate a pair of electron to form a coordinate covalent link between itself and central ion having an incomplete electron shell. For example, this. Okay. In this, the hybridization also play an important role in the coordination compound, in which sufficient bonding orbitals are not ordinarily available in the metal ions. The to understand this hybridization will be कि यहाँ पे आप देखिए कि in this complexation the electrons from half filled orbitals shift to the other orbital and create a vacant orbital. So then the ligands donate electron pair to the vacant orbital of metal ion and form the complexes. So that hybridization also plays the important role in the coordination. Then अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चिलेट्स की. देन व्हाट इज चिलेट्स? ये जो हम अब लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि चिलेट्स क्या होते हैं. दैट चिलेट इज derived from a Greek term that is known as kalos, which is known as claws. So here the chelation is a process of formation of two or more separate coordinate bonds between the polydentate ligands and a single central atom. So that are known as chelates. तो हमने इसका जो chelates का बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था वो तो हमारा सोडियम EDTA, यानी कि EDTA is the best example for chelates. What is EDTA? Is ethylene diamine tetraacetic acid. क्यों है ये बेस्ट एग्जांपल? Because it has two donor nitrogen and act as a bidentate ligand. When a drug form a metal chelate, the solubility and the absorption of both drug and metal ion may be affected, and drug chelation can lead to either increased or decreased absorption. तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है EDTA, citric acid, tartaric acid. These are the examples for chelates. So in this, some of the bonds in a chelate may be ionic or of the primary covalent type, whereas other are coordinate covalent links. When the ligands provides one group for attachment to the central ion, the chelates is called monodentate. ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में बताया हम लोगों ने what are monodentate, what are bidentate, what are polydentates and what are hexadentates. Then for example, pilocarpine behaves as a monodentate ligands towards cobalt, nickel and zinc, and to form chelates of pseudo tetrahedral geometry. Then what are the applications of that chelating agents की हम जो बात कर रहे हैं कि complexation में हम लोग chelating agents की हम बात करते हैं.
तो वो क्या है, कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो इन दिस अभी जैसे हमने एक एग्जांपल बताया है यहाँ पे सोडियम ईडीटीए का, दूसरा एग्जांपल हमने बात की पाइलोकार्पिन की। तो दैट पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, ड्राई आई सिंड्रोम में हम पाइलोकार्पिन यूज करते हैं। देन अनदर एग्जाम्पल, ये हमारा ईडीटी का एग्जाम्पल है। हेयर द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड इज द पायरिडीन टाइप nitrogen of imidazole ring of pilocarpine. The molecule with 2 or 3 donor groups are called bidentate and tridentate respectively. Then ethylene diamine tetraacetic acid has 6 points for attachment to the metal ion and is accordingly hexadentate. However, in some complexes only 4 or 5 of the group are coordinated. Then what are the examples, applications for that chelating agents or chelates? Number one is that EDTA. Best example for chelates are EDTA, or that EDTA is used to remove the calcium ion from the hard water. And second application is it is used in oxidative degradation of drug preparation, and ascorbic acid in fruit juice can be prevented by chelation with EDTA. Again, EDTA is also used as in vitro anticoagulant. देन दैट चिलेटिंग एजेंट स्पेशली, अगर हम बात करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स की, तो हमारा बेस्ट एग्जांपल है ईडीटीए। तो ईडीटीए को हम एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और उसका डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ईडीटीए। इट इज यूज्ड टू डिटॉक्सिफाई poisonous metal agents such as mercury, arsenic, and lead. Then EDTA is also used to remove color impurities from the antibiotic preparation. So these are the following applications of chelating agents. अब हम next बात करते हैं जो हमारा metal type complexes थे, तो उसमें हमारा first था inorganic complexes. ओके, तो हमारा फर्स्ट था इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट टाइप थी हमारी इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड वन थे हमारे चिलेट्स, एंड हम अब लेट्स डिस्कस अबाउट द ओलिफिन टाइप ऑफ और एरोमेटिक टाइप। तो व्हाट आर ओलिफिन टाइप? Olefin type complexes are the interaction of aqueous solution of metals such as iron, mercury, silver, etc. with olefins. That olefins is such as ethylene. Ethylene form is known as olefin complexes. These complexes are water soluble complexes. These type of complexes are generally used as a catalyst in the manufacture of bulk drugs and also in the analysis of the drugs. So these are the olefin complexes. Next category आती है हमारे aromatic type complexes. In this aromatic type complexes, this is divided into 3 categories. First one is pi complexes, second one is sigma complexes, and third one is sandwich complexes. So in this aromatic type complexes, here the interaction of metal ion with aromatic molecules such as benzene, toluene, and xylene form aromatic complexes. If the complex is formed by the pi bond between metal and aromatic molecule, then it is known as pi complexes. If the complexes form sigma bond between the metal ion and the aromatic molecules, is known as sigma complexes. और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम बोलते हैं सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। तो this is the classification of complexes as only for metal ion complexes. The first one is inorganic type, second one is chelates, or next one is olefin complexes, and fourth one is aromatic complexes. Okay, so these are the types of complexes. Okay, then in next class we will continue about organic molecular complexes.
or next category is inclusion or occlusion complexes. So next two categories, next two classification of complexes discussed in next class. Okay, good day, thank you.